मैंने तो मुझे कौन सा तो This बोलो। meeting is being recorded. हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबकी पहला बात क्या अलग होता अलग तो रहती है। आप अगर बहुत नहीं हिंदी या नहीं तो इंग्लिश जो भी यूज कर सकते पहला हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। అసలు इनिशिएटिव कालेना कने के बात छु बहुत मैं लिंक्डइन में पोस्ट देखने साथ मैं जाको सर्च कर डालम पहला। ओके ओके। कह ठीक के है। तो बाहर है ना, जो भी पेड कोर्सेस मिलते हैं सब भी है ना लाइव रिकॉर्डेड क्लास दे रहा है उनको। जस्ट डू इट योरसेल्फ एंड कंप्लीटेड देन वी विल गिव द सर्टिफिकेट को बोल डालते हैं। हाँ हाँ, राइट राइट। हाँ, उसके वो बाद तो में है, सही है। उसके बारे में बोलना चाहता हूँ। तो ठीक है। अ, हम लोग का स्टार्ट करेंगे। जी भाई। हाँ, तो मैं आई विल गिव यू क्विक इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ। So I started working from 2012. So after my college, I joined various courses. Like nowadays, freshers are struggling, right? So even I struggled a lot to find my first job. So I did a lot of courses that were in hype those days. Now, then after that, I joined a small company where I worked as a वेब डेवलपर की तरह काम किया. So where I have to take care of development, deploying, testing, everything. Like configuration, server admin की तरह भी, development की तरह भी, या client से बात करने की तरह भी. मतलब वो एक जो सॉफ्टवेयर था, student information management system. So that was student information management system. So I worked on that. That was built using PHP and MySQL. So that used to get deployed in schools and colleges. So nowadays, you see like a lot of digitalization has happened. So those days, that was initial phases. Lot of schools, colleges, they were not on like they were not recording their information in the database. They were recording in like normal. They were started to recording in databases. There were recording in registers, you can say, or files, documents, Excels. Most of the information they used to store in Excel. Okay. Then I moved in other roles. I got opportunity in ADP. So then from there, I struggled to work hard on learning SQL. So my next job in ADP was about T SQL. SQL सर्वर पे काम करना था. सो फ्रंट एंड एप्लीकेशन CRM था, बैक एंड एप्लीकेशन SQL सर्वर था. यहाँ पर भी मतलब ऑलमोस्ट सेम ही था, लेकिन डिफरेंस ये था कि ये जो CRM एप्लीकेशन था ना, वो इन द US में जो भी ऑटोमोटिव के जो डीलर्स रहते ना, शॉप्स, वो लोग ये एप्लीकेशंस यूज करते थे. तो सो व्हाट वी यूज्ड टू डू, वी यूज्ड टू मेक श्योर the data is updated uh, in the application before dealer open their shop. So that was our job. So sometimes ये तो बिजनेस साइड हो गया, मतलब वो लोगों का साइड, वो लोग के SLAs रहते, दे यूज्ड टू हैव SLAs लाइक बिफोर दे ओपन देयर शॉप. सर्विस ऑर्डर्स, जो भी रिपेयर ऑर्डर आए, इन्वेंट्री है, इस जरूरत है, तो ऑल दोस थिंग्स वी यूज टू गेट फ्रॉम अदर सिस्टम, process it night, in the night. Our India daytime is their night time, so we used to process it nightly job, then prepare it so that next day they can in the morning they can see what all the jobs their agent they need to do perform on their dealership side, so that runs their business smooth. ये था. फिर next I moved in internally, I moved into, I got the opportunity internally in the same company to move into data and analytics field. So वहाँ पर there I worked in Cognos प्लेटफॉर्म्स, जो भी डेटा प्लेटफॉर्म्स रहते ना, कंपनी में एक टीम रहती जो
पूरे कंपनी के जो डेटा नीड्स है, वो लोगों को प्लेटफॉर्म्स इंस्टॉल करके, एनेबल करके, सेटअप करके देते। सो आई वर्क इन दैट टीम वेयर वी वर एज ए enabler, you can say. We were a data enabler. So Cognos was there, ETL was there, and then data stage, Tableau, Snowflake, and time on time we used to uh, do POCs. Like whatever new tool has come, used to do POC. Okay, how it is better. ये मतलब ये टूल कैसा है, POCs करते रहते थे। तो ये सब Basically होता था। testing. हाँ, टेस्टिंग और लाइक टू फाइंड आउट, ये डेटा प्लेटफॉर्म्स टीम का काम ही ज्यादातर यही रहता है कि न्यू टूल आया तो ये कॉस्ट सेव कैसा कर सकता, पूरे एंटरप्राइज वाइड, मतलब पूरे कंपनी वाइड ईज ऑफ यूज कैसा बढ़ा सकता, मतलब यूजर एडॉप्शन का भी सोचना पड़ता है। क्योंकि न्यू टूल जब भी आए यूजर देखेंगे अरे ये क्या है, वो लोग को एकदम अडॉप्ट करने टाइम लगता है, उसको ट्रेनिंग भी देना पड़ता है लोगों को। तो बहुत सारे ऐसी चीजें किया हूँ मैं। फिर ऑल्ट्रिक्स, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट टूल है। तो ऐसा पीओसीज करते थे ऑन द स्नोफ्लेक, जो क्लाउड डेटा वेयर हाउस है ना। So all these things. Current in my job, I am doing a lot of things, like handling huge amount of data, like petabytes. You can say. Data analytics on petabyte scale. So currently, I'm using SQL and data engineering tools like Databricks, Snowflake, and Azure Data Factory, and what you can say, PySpark, Python, Airflow, all those things. So why I told you all of this is because so uh, generally whatever we do, it is supporting some of the business. So mainly whatever task we are doing, it's supporting some of the business, some of the internal departments. So if you are working somewhere, so you find out like what is your domain of work, what is your domain of work in your current company, and find out the data team that you have in your current company, and ask them like how they are supporting the data needs of internal organizations, are they supporting external client. Yes. So all these things are there. So this was just a brief introduction about me, थोड़ा ज्यादा हो गया। तो आप लोग इंडिविजुअली बता सकते कि आप लोग का इंट्रोडक्शन एंड के एक्चुअली क्या फाइंड आउट करना चाह रहे, क्या हेल्प चाह रहे इस सेशन से। So I'll start myself. हाँ जी बोल। Uh, तो मैं यूसुफ हूँ। मेरे को ऑलमोस्ट 5 साल का एक्सपीरियंस है। तो आई स्टार्टेड माय करियर फ्रॉम दिस मेडिकल कंपनी, यूएस हेल्थ केयर। आई जॉइंड एज अ एडमिनिस्ट्रेटर फर्स्ट। आई यूज्ड टू हैंडल इंटर लाइक यूएस एडमिनिस्ट्रेशन, so scheduling CEO meetings with the realtors, then checking whatever happening in the US office. If the AC is not working, if the uh, front desk needs any help. So those kind of things I used to do. So then after that, I joined the calling team. After taking care of 6 months, they hand over the calling team. Like I used to handle almost 4 5 people there. So then I took care of the coding team. For 1 year, I did medical coding just for the psychiatric department. Uh, I used to take care of almost 4 5 people there as well. Then I handled single-handedly, I took care of the coding team for 1 year. So I was getting like good incentives there. Then they thought that I am
overcharging I'm overcharging them as taking incentives, so they reduced my incentive. So soon after that, I put down my papers there because I was not getting incentives, and my salary was less that time. So I was getting my money through incentives. Then I Mm-hmm. joined the Primera Medical Technologies. Now I'm working as a medical records. So I'm working in a department where legal team will take care of US healthcare medical records department. So medical records, we will have like uh, I would say lakhs of data. We have like something around 50,000 US employees in US. Mm-hmm. So Primera is kind of like number one hospital chain company in US. So we have something around 45 hospitals chain. So we have something around lakhs of patients. So I would say my way of approach here is to get some knowledge where I could help my process or maybe some other processes to automate their processes through SQL, because in my company we have my SQL developer openings. So I've seen something recently they've mentioned like they need some SQL developer or something. तो Okay, like मेरा what approach था experience they need? Like कितना experience देख रहे हैं वो लोग SQL developer के लिए? मैं अभी सीक्वल नहीं मतलब सीखने के लिए आया। कुछ नहीं कुछ हाँ ओपनिंग्स चल रहे बोले ना मतलब तो हाँ कितना हाँ। एक्सपीरियंस पूछ तो रहे हो? तो यहाँ पर अभी एक्सपीरियंस वो लोग देख रहे 5 to 15, अच्छा ओके या एंड less is also fine as they were saying. So packages is also from 5 to 15. So sorry, the experience is 0 to 5 and the हम्म package was 5 to 15. ओके 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 तो लाइक इज Yeah, मल्टीपल ओपनिंग्स है या फिर आई मीन yeah, multiple openings, मल्टीपल ओपनिंग्स multiple ओके ठीक है openings, and they are hiring for all the associate to manager. ओके ओके Yeah. ओके तो हाँ हमारा कंपनी ऑलमोस्ट 4,000 एम्प्लॉयज है यहाँ पर इन हैदराबाद. So that is what my goal is, to just switch from my process to their process or help my process achieve some good things. ओके ठीक है समझ गया हाँ थैंक यू Nasmuddin, you can go ahead. Can I briefly explain like what are your skills and what are you expecting from this mm, mentorship program and what are your goals that you want to achieve? Currently, I have 2 years of experience. Just I completed my bachelor's degree in 2023. Then I joined the company in OSI Digital. Currently, Okay. I am working as SQL database administrator. That is Mm-hmm. on we work on SQL Server, but we didn't have much projects and we didn't get any so much of tasks to do. Yeah, usually we do some backups and restorations or reducing the file storage. Maximum these activities coming Okay. because I was stuck in this team. I didn't learn much. I didn't not able to learn much things. So Okay. I would like to switch a data analyst career or Okay. Okay. SQL developer. I would upscale my knowledge and skills where I can use this knowledge to get a switch to another company. That's it. Okay. Okay. Yeah, I understand. So even I told you my experience with ADP, right? So even I worked as a admin also, like their like development as well as admin. So now the concern is like admin work is getting automated, almost Yes. like DevOps you have right. So it's getting automated almost. Now for deployment, you don't need to do much of the thing. Just
push it in Git, then it will automatically get deployed. So it's better you learn those skills which are in demand right now. Okay. Yes. Yeah. Okay. Hidayat, you can go ahead. Yeah, so my name is Hidayat. So I have an experience of around 2.5 years working at Infosys, Bangalore location. So my current job role is working on tickets such as incident management, release management, and all. So I'm currently looking for a change in my career. I want to transit my career into data analytics. I'm just learning new skills and upgrading myself. Okay. And just for information, like Hidayat is on new notice period. He's my cousin. So he's also looking out for jobs in Hyderabad location. So he upskilled to SQL and Tableau. So if you have any referral, just please give a referral to him. He's already on notice period. Um, so that will help. Okay. So we'll So, start. So I yeah, heard I'll your reach out goal. to Hidayat separately. Okay, okay, If okay. yeah, Okay, I'll start. So I heard your goal, Yusuf, like you want to transition to the data team, and like Nazmuddin, you are working as a DB, you want to transition to data analyst, and Hidayat, you also want to transition to data analyst. So first thing, before I start the course, first thing we should make our mindset that everything in IT is learnable. So we should not doubt ourselves that, oh, I have not worked on this, how I could pick up, I don't have experience, how I could join this team, how can I learn this? So all those doubts we should keep aside. So we have done our college degrees, we have done lot of studying in our college, lot of projects we might have done. We have gone through all of this. That means anything in the IT we can pick up if we have the right mindset. So that self doubt we should put it aside. So first thing you should think that, okay, anything that I practice I can do. That is the mindset we should keep. Even if you don't have experience, just practice, you will get the experience. Okay. Okay. So so for transitioning into data analytics, so right now, what are the skills that are in demand that you think? Just one by one, you can go ahead and tell me. mm, SQL. Yeah, I think it's SQL, MS Excel, the visualization tool, either Power BI or a Tableau, uh, and Python, coding language like Okay. Python. Not in advanced, Okay. but just a basic thing. Okay. I You was I was about to say the same. okay? Same thing. SQL, Python, Tableau, Power BI, data visualization, MS Excel. And Nazmuddin. शायद भाई सेम मैं भी ये बोलना चाहता मैं भी सेम वो बोलना गलत है लेकिन क्या हो गया तो सुबह जो ना ये देखते लेकिन स्टैटिस्टिक्स और मैथ्स भी ये यूज़ करना पड़ता है क्योंकि मैं सुनता हूँ एक इसके बारे में कौन भी ज़्यादा बात करना नहीं है Mhm. क्योंकि वो भी यूज़ करना पड़ता है क्या कि यूज़ करना होता है लेता हूँ मैं है तो मेरे कैसा था कि आप कुछ मालूम होना फिर ओके ओके हाँ ठीक है समझ गया मैं अम, अब हाँ समझ गया आपका क्वेश्चन सो ये डेटा एनालिस्ट के लिए कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है वो कभी चेंज नहीं होते तो पहले तो हमको वी हैव टू बी like strong on those fundamental concepts like if someone wakes you up at the night and asks you what is this, you should be able to tell without much thinking. So you should make those fundamental concepts strong. ठीक है सो फर्स्ट मैं ब्रीफली आप लोगों को बताऊंगा सो व्हाट आर दोस फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हाँ ठीक है ना सो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट
डेटा एनालिस्ट के लिए एक तो समझना है कि अंडरस्टैंड व्हाट इज डेटाबेस, ये डेटाबेस है क्या, एंड हाउ टू डिजाइन डेटाबेस, ठीक है, एंड व्हाई व्हाई वी आर डिजाइनिंग डेटाबेस, व्हाई, हाउ, व्हाट, व्हाई, ये समझना है। देन टेबल्स, टेबल्स कैसा डिजाइन करना डेटाबेस के अंदर, हाउ टू डिजाइन tables. So generally, like you might have created a table in SQL Server or any of the instance, create table name. But designing tables in such a way that we model the data modeling, ठीक है? तो फॉर एग्जाम्पल आप लोग देखे होंगे कि कितना डिजिटलाइजेशन हुआ है, जैसा अपना हर चीज में आपको ऐप है ऑलमोस्ट। तो ऐप के बैकएंड में क्या होगा, आप सोचे कभी बैकएंड में क्या है? कुछ कोडिंग। आंसर? बैकएंड में मैं समझता हूँ कि अलग अलग रहते हैं, जैसे कोडिंग रहता है और है हम्म। ना, ये लोग है ना डेटा हमके पास से ले लेके वो भी उनका, जैसा बोले तो मैं फ्लिपकार्ट देखते रहता, फ्लिपकार्ट में है ना हम्म। जो है ना ज़्यादा सेल होते रहता है, वो लोग हम्म। है ना उसका डेटा पकड़ को उसका रिस्टॉक करना वो करना करते रहते बोल तो के मैं डेटा समझता हूँ। कहाँ स्टोर करते हो लोग? डेटाबेस में स्टोर करते हैं, लाइक हाँ डेटा स्टोरेज था ना वैसा। हाँ, राइट, करेक्ट। तो ये फ्लिपकार्ट का एग्जांपल लेंगे हम लोग, ठीक है। फ्लिपकार्ट फ्लिपकार्ट में डेटा, ये तो जनरली जो भी मतलब डेटा एनालिस्ट हो रहा, डेटा एनालिस्ट क्या कर रहे, एक्चुअल वर्क क्या है उन लोगों का, क्यों हायर किया जा रहा, डेटा एनालिस्ट को हायर क्यों कर रहे? तो आप इसका आंसर क्या है, आप क्या दे सकते हैं, वो व्हाई दे आर हायरिंग डेटा एनालिस्ट? एनी आंसर्स? Yeah, so if we take in terms of sales, so they need to analyze the sales of each product or the based on the categories. They do analyze it, uh, the number of sales of these products, the profits which they are getting, and just to restock as I was saying, to restock the things and all, They will look at the and to meet behavior the also, demands. behavior of the users. Okay, behavior of users. So behaviors in the sense, what kind of behaviors? So whenever, like, if I'm going to Flipkart and searching something, they will suggest us Okay, more. So okay, that is also an aspect. okay, okay. Yeah. And anything else? मैं समझ रहा हूँ कि not only in the sales, it could be in any field related to, like if we go to the content entertainment genre, if yeah, more people are watching about entertainment videos, then they can make more that in that genre, मैं वैसा भी समझ रहा हूँ। Okay, ठीक है। Yeah. So first, Suggestion wise, हाँ, usually people will use in Netflix and Amazon. हम्म, हाँ, अच्छा, हाँ, right, हाँ। Or any other suggestion you have? Any other thing? Prediction of futures. Prediction. Yeah, Okay, make predictions. prediction. Bhai, I'm very new to this, so I might be a slow learner No, here no need. I mean, it's okay. That's okay. No problem. Uh, everybody is because different. Okay. So first, I got few answers, right? So, uh,
प्लस हम लोग समझेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेटा एनालिस्ट एंड अदर फील्ड्स। ओके, डेटा एनालिस्ट एक है, तो अनदर वन इज डेटा साइंटिस्ट, so another is another stream is machine learning। ठीक है, सो डेटा एनालिस्ट का काम ये है कि डायरेक्ट बिजनेस के साथ वर्क करना, बिजनेस टीम्स, ओके, बिजनेस यूजर्स, वो लोग बिजनेस यूजर्स के साथ वर्क करते हैं, मेनली उन लोगों का काम ये है कि डेटा साइंटिस्ट का काम ये है, डेटा साइंटिस्ट का टास्क जो है ना थोड़ा सा एडवांस है डेटा एनालिस्ट से। तो आप जो बोल रहे थे ना नजमुद्दीन, स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स के बारे में बोल रहे थे ना, हाँ वो यहाँ आता है। ठीक है, और जो अभी आप लोग बोल रहे थे कि प्रेडिक्शंस, वो इस कैटेगरी में आता। ठीक है, तो लर्निंग पाथ फॉर डेटा एनालिस्ट इज डिफरेंट, डेटा साइंटिस्ट इज डिफरेंट, एमएल इंजीनियरिंग इज डिफरेंट, बट तीनों भी कहीं जाके ओवरलैप होते हैं। ठीक है ना, तो लर्निंग पाथ ये लोग के लिए, तीनों के लिए अलग अलग है, लेकिन स्किल्स कुछ ओवरलैप होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सीक्वल एक स्किल है, तो ये जो आपको काम आएगा तीनों में भी, तो ये ओवरलैपिंग स्किल्स है। जैसा एक्सेल है, आपको कुछ क्विकली एनालाइज करना है डेटा, तो आप जो है डेटा एक्सेल में पेस्ट कर लिए, वो जस्ट ओवरव्यू स्किम करना है, ओके कौन सा रोज कौन सा वैल्यू, तो एक्सेल काम आता। लेकिन सीक्वल जो स्किल है ना, ये किस ज्यादा काम आता। एक्सेल यूज होता डे टू डे, लेकिन ये क्या है बोल तो जस्ट एक बेसिक स्किल है, मतलब यू शुड नो, बोले ऐसा है, कोई पूछेगा नहीं, आपको रेज्यूमे में मेंशन करने की भी जरूरत नहीं है एक्सेल के बारे में। इट्स अंडरस्टूड दैट इफ यू वर्क इन डेटा एनालिस्ट, आपको एक्सेल मालूम ही है बोले ऐसा, सो इसका मेंशन करने की जरूरत नहीं है। फिर डेटा एनालिस्ट के लिए स्किल जरूरत है ईटीएल, डेटा मॉडलिंग। तो ईटीएल स्किल जो है ना, बेसिक ईटीएल, एडवांस ईटीएल की जरूरत नहीं है। डेटा मॉडलिंग आना चाहिए अच्छे से, डेटा मॉडलिंग। अभी डेटा मॉडलिंग में टू टाइप्स के डेटा मॉडलिंग है। एक ना, एक रिलेशनल डेटा मॉडलिंग है, एक रिलेशनल, और एक है डायमेंशनल डेटा मॉडलिंग। ठीक है, सो ये जो स्किल्स है, अगर आप ये स्किल्स एक्वायर करें, तो ये ऑलमोस्ट 70 to 80% स्किल है डेटा एनालिस्ट के। नेक्स्ट, डेटा विजुअलाइजेशन, जैसा कि ये टैबली और पावर बीआई। ठीक है, तो ये है, तो वही वही डेटा साइंटिस्ट के लिए स्टैटिस्टिक आना चाहिए, और एल्गोरिथम्स, क्या बोलते उसको, मॉडल्स, बेसिक मॉडल्स जैसा है, बेसिक मॉडल्स कैसा यूज करना, जैसा कि
लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ऐसा। और बहुत लिस्ट है लंबी, लेकिन ये जस्ट बेसिक स्किल्स है। वैसे मशीन लर्निंग के स्किल्स ये दोनों से ओवरलैप होते हैं, लेकिन डेटा साइंटिस्ट का काम एडवांस डेटा एनालिस्ट बोल सकते हैं। डेटा साइंटिस्ट को एडवांस डेटा एनालिस्ट बोल सकते हैं। और यहाँ पर पाइथन ज़्यादा यूज होता डेटा साइंटिस्ट में, डेटा साइंस में पाइथन। तो डेटा एनालिस्ट में पाइथन बहुत कम यूज होता, बिकॉज मोस्ट ऑफ द काम, मोस्ट ऑफ द वर्क सीक्वल में आप कर ले सकते हैं। ठीक है। सो अभी मैं ये दोनों में ज़्यादा नहीं जाता हूँ, क्योंकि हमारा गोल ये है। तो ये दो रोल्स में ज़्यादा डीप नहीं जाऊंगा मैं। अभी हम लोग बात कर लेते हैं टूल्स की। ठीक है। सो क्या क्या टूल्स है जो करंटली इन डिमांड है, कुछ आइडिया है? Uh, to take the data or to analyze the data. हाँ, तो क्या So क्या टूल्स है, टूल के नेम्स बोल सकते हैं आप? RDBMS, I think it is Oracle हम्म। and ओरेकल, हाँ। and I just know Oracle because my friend डेटास, is ओके, working in Oracle. ठीक है। SQL आरडीबीएमएस के 7, लिए ओरेकल, सीक्वल सर्वर, SQL 7, SQL Server. ओके। एंड Postgre, MySQL. हम्म, सॉरी, MySQL. माई एसक्यूएल और PostgreSQL, पोस्टग्रेस, ओके। एंड Snowflake. स्नोफ्लेक। एंड इन डेटा विजुअलाइजेशन और ईटीएल में क्या क्या टूल्स आते हैं? ETL में शायद SSIS और SSRS का था। कौन सा ईटीएल भाई में नहीं होता? एसएसआईएस आता। ओके, रिपोर्टिंग सर्विस में SSRS आता। ओके ओके। हाँ, डेटा विजुअलाइजेशन एंड रिपोर्टिंग, एसएसआरएस। और मतलब इसमें और नेम्स बोल सकते हैं आप लोग ये दो कैटेगरीज में? Tableau, Power BI, data visualization. टैब्ल्यू किस में आएगा, कौन से कैटेगरी में? Data Visualization. विजुअल, ओके, ठीक है। टैब्ल्यू, पावर Power बीआई, BI. ओके। यहाँ पर ईटीएल में Alteryx. ऑल्ट्रिक और ADF भी आता उसमें, Azure डेटा फैक्ट्री भी आता ETL हाँ, में। एडीएफ, ईएलटी मतलब एक्सट्रैक्ट लोड एंड एक्सट्रैक्ट और लोड, ट्रांसफॉर्म। राइट। हाँ, ओके। और कुछ नाम याद है? ठीक है। डेटा डेटा विजुअलाइजेशन में बोले तो एक्सेल भी बोल सकते ना। एक्सेल। हाँ, बोल सकते हैं। एक्सेल, एक्सेल क्या है? ठीक है, हाँ, एक्सेल भी बोल सकते हैं। एक्सेल में भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। एक्सेल क्या है, बगैर एक्सेल के आपका कोई भी काम नहीं होता, क्योंकि ओके जनरली हर मैक्सिमम एक्सेल बहुत ज़्यादा यूज होता जब भी आप डेटा से वर्क कर रहे हैं। क्योंकि एक्सेल क्या है, आप एज सुन एज यू ओपन, आप इमीडिएटली देख सकते हैं, फिल्टर आउट कर सकते हैं, कुछ फॉर्मूलास अप्लाई कर सकते हैं। तो डेटा एनालिसिस स्मॉल डेटा सेट पे, जैसा जब भी हमारा कुछ बिग लार्ज डेटा सेट है, उसको स्मॉल बना के, मतलब उसका एक पर्टिकुलर पार्ट डाउनलोड करके एक्सेल में क्विकली एनालाइज कर सकते। तो एक्सेल का स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेंशन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इट्स अंडरस्टूड, क्योंकि बगैर उसके आपका काम ही नहीं होता ऐसे। समझ गया आपका पॉइंट, नोट कर लिया। सो ये सब स्किल्स है। तो लेकिन
ये टाइम कितना है? 5 मिनट 2 मिनट है। ओके, मैं एक लिंक शेयर कर दूँ ये चैट में, आप लोग सेव कर लो। ये एंड हो जाती है मीटिंग, इसके बाद फिर कंटिन्यू कर सकते हो कुछ और टाइम। जी। This meeting is being recorded. हाँ जी। We have the other people who have already listened to all this stuff, right? I would better say I want someone else to what do you call take out this session like जहाँ तक आप बोले ना अभी. So I want someone हम्म, else to repeat it again because you already did it. I think whatever they have understood, it's better for them if they literally take it up and just explain me. And if yeah, they are sure, wrong, then we that can is correct it. yeah, that is uh, awesome because they will also uh, repeat it. Yeah. हाँ, so Yep. कोई बोलना चाहेंगे? प्रदीप को एक्सप्लेन करना चाहेंगे अब तक हम लोग क्या डिस्कस करें, वॉट एवर वी हैव डिस्कस। So यूसुफ, guys, you need not to worry. हाँ I mean, Hello, hello, me hello, and Shad hello. bro. Yeah, go हाँ, ahead, Nazmuddin. नजमुद्दीन यू कैन गो। Uh, Yep. Firstly, hi bro. My name is Yep. Najmuddin. Mhm. As of now, we discuss about the what are data analysts do and what are the tools they are working on. What are the difference between data analyst and data scientist and Mhm. machine learning. Mhm. Okay, and as of that, the basic requirement is the SQL and ETL. ETL basis Mhm. not too deep, and ETL basics and data modeling. As of Okay. these three and one data visualization tool, either Tableau or Power BI, I think these are enough for the data analyst. For the Mhm. data scientist role, we need to some more to it, statistics and machine learning, basic machine learning. Mhm. For the machine learning, we need to do predictions like what we do. And another thing is that where are the data analyst work on? Okay, data analyst work on Mhm. the. I think I know I'm not working in data analyst field, but I think that they will work on the this marketing side. Like if in this session we take the Flipkart as the example. In the Mhm. Flipkart, some any product is solding out too quickly, and so most of the people ordering that they will analyze that the tool has demanding on the market, so they can restock it and available for all people. Other than that, we discuss about the two tools what are need to do. For Mhm. the RDBMS, we have different tools like Oracle SQL Server, PostgreSQL, and Yep. MySQL. Correct. And for the data visualization tool, Tableau and Power BI, we can say Excel or that. And ETL, Mhm. we have SSIS. Okay, I Okay. know SSI, but I didn't hear that about Alteryx word. And Mhm. the ADF I know as a data factory. That's it, I think. Okay. Yep. That's cool. Shad, would you like to add something on it? Yes. Like, Yeah. So I'll yep. continue. So Mhm. what I would like to say is data analyst. So just these skills are like 80%. So whatever the SQL, Mhm. ETL, data modeling. Mhm. In data modeling, there are two types: relational data modeling, dimensional data modeling. Okay. Mhm. So what I also told was perfecting our fundamental concept is necessary. What most important? Why? Because they will not change. Because every Okay. now and then we see new tools are coming, right? So Correct. you yesterday we heard of SSIS. So when we were working, we were die hard, uh, like uh, going and to tuitions or sessions to learn SSIS, SSRS. Then new tool came Tableau, then Power BI, then Mhm. Looker.
So Mhm. tools come and go. They get hype, Correct. then hype get reduced. So how to handle all those things? So by Okay. perfecting our fundamentals. So when we perfect our fundamentals, even if the new tool comes, we can easily transition whatever we have learned because these concepts will not change. Tools might change. Correct. So these Correct. skills are almost 80%. Then next remaining remaining these skills are 70%, remaining 30% your hands-on, like your practice, your coding skills, like interview preparation, practicing Hmm. in timed manner. All Okay. those skills will come. So coming to tools, okay, let's start it from here. Okay, tools Hmm. we have RDBMS, Oracle, SQL Server, MySQL, Postgres, Snowflake. Yes. So in these databases tool, what do you think which tool we should learn? I think Postgres and Snowflake. Snowflake, okay, Postgres. uh, Postgres, okay. Any other? Yeah. Because I've been hearing about Postgres and Snowflake a lot. Like in terms of obviously like relational database. I know most of the enterprise. What do you call organizations they have started shifting from MySQL to Postgres, and yeah, Snowflake is already there in market for a while, I think. Okay, Because I remember we were using you and me when we were working for the implementation team. I remember we were using MS SQL. I mean MySQL basically. okay. So okay, Yep. others can also tell Yusuf, Nazmuddin, Hidayat. So what do you think? Which database we should learn? I would suggest, if I'm not wrong, we should work on our fundamentals first because Okay. as we heard, like we will get a lot of tools coming up, and we'll get a lot of tools, and we'll future on in future near future also we'll get a lot of tools. So it's better if we focus on our fundamentals than focusing on this SQL softwares. Okay. Okay. Nasmuddin, what do you think? Which database we should learn? Database tool we should learn? Okay, for me, as currently working on SQL Server. Any other database is Okay. fine. Okay, that's Hmm. it. Okay. And Hidayat, what do you think? Which database tool we should learn? I think the queries are same, and these tools are just different by names and a bit minor changes in the query. But 80% of those uh, platforms they Based. worked on the same query. So I don't think there it makes any difference learning with the different tools. Okay. Okay, I got your responses. Okay, so I'll go ahead with my explanation. So, uh, so currently, if you are working on any of the database, or if you have worked on any of the database, then you can master one particular database. Okay, like if you are working on SQL Server, be a master in that. If you are working on Oracle, like perfectly. So these are just vendors. Okay, MS SQL is Microsoft's Microsoft's database. Oracle is Oracle's Or Oracle's database, and MySQL is also maintained by Oracle. It is open source as well as it is maintained by Oracle. So these two are enterprise. So you have to buy license. So MySQL is open source, but it's maintained by Oracle. So even Snowflake is also open source. Okay. So databases, all of them work in same way. So just vendors are different. Like MS SQL Server is of Microsoft. Oracle database developed by Oracle company. So the fundamental concepts here are like what is important in the uh,
to learn a database, what are the concepts that are important? So I shared one PDF, right? So here Yep. I saw fundamental database concept. Okay. Yep. So if we learn these fundamental database concepts, like what is database? Database properties, what are the properties of database? Like database management, how it is happen, like what are the benefits of database, and how to create a database, and okay, how to control data redundancy, data sharing, how does it happen? So if you know about these fundamentals, you can pick any of the tool. So you can pick Oracle, MySQL. If someone assigns you in a project in Oracle, you can pick up because you know the fundamentals. So the fundamental is top level. You will have a server. In the server, uh, let's say this is SQL Server. One second. Okay. So this is SQL Server. What happened is it's writing behind this. Okay. Let's say there is a server called SQL Server installed, setup provision. So inside that we create a database. Okay. Inside that we create tables. So now Yep. why we are creating the database? Because it serves certain business. For example, Flipkart example we took. So all of this information like orders, deliveries, products, items, it is stored in the database. So first we should identify the purpose of creating database. So based on that purpose, we'll define the data model. So we talked about this data model, right? Data modeling. Yep. Okay. So based on these business domain, that data model is defined. So right now we have lot of domains like healthcare, um what others, like retail, Finance and insurance, banking. yeah, finance, banking. Entertainment. So yeah, entertainment. So each of these, for each of these domains, they design a data model. So for us, knowing relational data model is very much helpful. So this relational data modeling uh, comes under uh, software engineering because these people work directly with front end teams. Those who build, like this is Flipkart front end. Let's say this is uh, so let's say this is Flipkart site. Hmm. This is developed by front end team. Now those software engineers, what they will do, they will develop the relational data model. So these can be SQL developers also. So it will be a big team. They will design the relational data model. So that will have a one database with lots of table. For each and every task, we'll have one table. For example, I'll say, for example, uh, let's say for Flipkart, what are the tasks? So as a user, you sign up, right? So there will be one user table. Then you also log in at certain times, right? So for login, you'll have a login table.
and you search something. So they'll have your search history, and then you put some product in the cart, then item cart, a live certain live table, or then orders Favorites. table, like what you have ordered. Yeah, then payment, delivery. So for each of these tasks, they will have lots and lots of tables. So that is called relational data model. And so these database tables are designed such a way that they are connected together through joins or some common field between two tables. Okay. So for example, I can show you relational data model sample diagram for like online order management. So here you can see, okay, expand this. Okay, so can you see this? Can you all Yes, see? yes. Okay, so here you have employees table, shipping methods, customers, products, brands, payment method, payment, orders, and order details. So what are you noticing in this diagram? Can you just describe once? It's But connected to one another. okay, that is one thing. Next, Through a common column, they are related to each other. Common field. okay, okay. Next, any other thing that you notice? I think from each and every table they have a common field and that like centralized. I think Yeah, it is like in one of the that, table. right. And any other thing that you notice? Any other The small detail? columns, maybe the rows, like in each table, we have some same IDs, same, what do you say, the names. Like if you say in payments, we have order ID, employee ID, and here if we see in the order, we have order ID. If we see in the shipment, we have shipment ID. So Yes, yes. yeah, it's correlated. Like we can identify easily with that. Right, right. So the document that I shared you, right? If you read that document, you will find this information. Like, for example, each table will have ID anyhow. Like customer table, first we will define ID, then it will be primary key. That means when we design relational data model, we'll start with like whiteboarding. So we'll take a whiteboard, we'll take, okay, Flipkart application है उसमें क्या क्या टास्क हो सकते हैं, या ऑर्डर्स आ सकते हैं, पेमेंट आ सकता, ब्रांड्स भी है हमारे पास, प्रोडक्ट भी है, कस्टमर्स भी है, तो सबको अलग अलग कैटेगराइज करके सबका एक टेबल बना रहे हैं. तो कस्टमर्स का है क्या, कस्टमर टेबल, देन inside that customer ID. ओके, सो कस्टमर आईडी के साथ उसके एट्रीब्यूट क्या हो सकते हैं. ओके, कस्टमर का नेम हो सकता हो, उसका सिटी, उसका पोस्टल कोड, फोन नंबर भी स्टोर करना है हमको. तो वो सब हम लोग वाइट बोर्डिंग करते हैं सब. सो डिजाइन पार्ट में ये सब आता है. तो ये Mhm. जनरल इंफॉर्मेशन है. अगर आप जनरली कौन सा भी एप्लीकेशन आप जो ज्यादा यूज करते, अगर आप उसके बारे में सोच कर आप वाइट बोर्डिंग करें, तो आप भी एक रिलेशनल डेटा मॉडल बना सकते हो. कनेक्शन के ईच टेबल और उसका कनेक्शन कैसा करना. तो कस्टमर्स का ये सारा इंफॉर्मेशन. लेकिन आप जिस ये नोटिस करेंगे आप लोग के कस्टमर्स में कस्टमर आईडी प्राइमरी की है,
शिपिंग मेथड्स में शिपिंग मेथड आईडी प्राइमरी की है, एम्प्लॉयज में एम्प्लॉय आईडी प्राइमरी की, पेमेंट में पेमेंट मेथड आईडी प्राइमरी की एंड इट लिंक्स टू सम अदर टेबल एज ए फॉरेन की। तो यहाँ पर नोटिस करो ये एक डिफरेंस है, पेमेंट मेथड में पेमेंट मेथड आईडी प्राइमरी की एंड ऑर्डर्स में ये सारे फॉरेन की है, ये ऑर्डर डिटेल्स बोथ प्राइमरी की एज वेल एज फॉरेन की। सो जब भी हम लोग प्राइमरी की डिफाइन कर रहे हैं तो प्राइमरी की के रूल्स है, तो आपको ये इंटरव्यू क्वेश्चंस में जो है ना ये माइन्यूट डिटेल्स वो लोग पूछ सकते हैं। ओके, व्हाट इज प्राइमरी की, तो आप बोल सकते हैं प्राइमरी की जो भी उसका डेफिनेशन है कि इट्स स्टोर्स यूनिक आईडी वैल्यूज, यूनिक आईडी वैल्यूज इनसाइड ए टेबल, सो इट आइडेंटिफाइज ए यूनिक रिकॉर्ड। मतलब पूरे कस्टमर में आपको यूनिक कस्टमर कैसा आइडेंटिफाई करना, कस्टमर आईडी मतलब हर एक कस्टमर का एक आईडी यूनिक ही रहना है कि नहीं। अगर समझो यूनिक नहीं रहा तो क्या डेटा इश्यूज आते हैं, सो यूनिक रहना चाहिए। सो इसमें अगर आपको फॉलो अप क्वेश्चंस आ सकते हैं इंटरव्यूज में, जैसा कि आप लोग जैसा इंटरव्यूज देंगे ना तो ठीक है प्राइमरी की यूनिक रिकॉर्ड है, तो प्राइमरी की के प्रॉपर्टीज क्या है, ये प्राइमरी की अ, जो है बता सकते हैं क्या, ऐसा सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो जनरली आप लोग जब डिजाइनिंग के बारे में पढ़ेंगे ना तो ये सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस थोड़े आसान हो जाते हैं आंसर करने में, ठीक है। तो शिपिंग मेथड में शिपिंग मेथड आईडी प्राइमरी की, तो यहाँ पर फॉरेन की में जाऊंगा मैं, फॉरेन की देखो अभी पेमेंट में पेमेंट मेथड आईडी प्राइमरी की है, मतलब पेमेंट टेबल का प्राइमरी की पेमेंट मेथड आईडी है और एज ए फॉरेन की यहाँ पर भी यूज हो रहा है। कौन सा टेबल, ऑर्डर्स टेबल में भी यूज हो रहा है। दैट मीन्स ये रिलेशनल डेटा मॉडल क्या है, मतलब स्ट्रिक्ट मॉडलिंग फॉलो करता हूँ, टाइट कपल्ड रहते, ईच टेबल्स टाइटली कपल्ड और डेटा रिडंडेंट नहीं होता, मतलब डुप्लीकेट डेटा नहीं रहता, ठीक है। तो ये फ्रंट एंड हो गया, तो इस पे आप लोगों को ज्यादा काम नहीं रहेगा एज ए डेटा एनालिस्ट, लेकिन ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये क्योंकि ये बेसिक है और ये समझने से आपको एडवांटेज क्या होगा बोल तो फॉर एग्जांपल आपके कंपनी में आपका डोमेन है या फार्मेसी या हेल्थ केयर या जैसा बैंकिंग या फाइनेंस, तो अगर आप ये रिलेशनल डेटा मॉडल आपकी कंपनी में आप जो काम कर रही है रिलेशनल डेटा मॉडल कैसा बना, अगर ये आप समझ लिए तो बिजनेस समझना आसान होता, क्योंकि ईच ऑफ द थिंग्स कैसा लिंक्ड है। और देन फाइनली आपको डेटा एनालिस्ट एज ए डेटा एनालिस्ट जब आप सोचे ओके ये बिजनेस ऐसा काम कर रहा तो उसको एग्रीगेशन में ऐसा कर सकता हूँ कि ऑर्डर्स का ओवरऑल समरी चाहिए, फिर सब सब कैटेगरी का भी समरी चाहिए, ऐसा आप थॉट प्रोसेस बना सकते हैं। जस्ट ये हेल्पफुल रहता इसको समझने में। और एक मॉकअप एज ए प्रैक्टिस कुछ रिलेशनल डेटा मॉडल्स प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, मतलब बना के इन सीक्वल और या वाइट बोर्डिंग जैसा प्लेन पेपर पे, उससे क्या हेल्प होता बोलता एक कॉन्फिडेंस आता जब भी आप बात कर रहे इंटरव्यूज में और वर्क पे भी काम कर रहे हैं एज ए, मतलब आप दूसरे फील्ड से इसमें ट्रांजिशन हो रहे हैं ना, तो ये रिलेशनल डेटा मॉडल वाइट बोर्डिंग करके कुछ बनाने से आप कॉन्फिडेंस भी आप। तो हम लोग अभी वापस जाएंगे डेटा एनालिस्ट रोल्स पे। सो ये था स्किल रिलेशनल डेटा मॉडल। तो रिलेशनल डेटा मॉडल समझने से बहुत ज़्यादा आसानी होती है डेटा एनालिस्ट को कि एप्लीकेशन का डेटा कैसा बना हुआ है। नाउ एक्चुअल वर्क जो डेटा एनालिस्ट करता है डायमेंशनल डेटा मॉडलिंग पे, जिसमें रिपोर्टिंग होती है।
सो डायमेंशनल डेटा मॉडलिंग में क्या होता, डेटा रिपीटेशंस बहुत रहते। ओके, डेटा रिपीटेशंस बहुत कैसा रहते, फॉर एग्जांपल आप बैंकिंग ले लो, अगर आप समझो बैलेंस 10,000 बैलेंस 10,000 बैलेंस है, ठीक है, तो आप डेबिट करें 1000, तो रिमेनिंग कितना रहना बैलेंस 9,000। तो ये 9,000 है। वैल्यू, हाँ। हाँ ये वैल्यू डेटा वेयर हाउस में स्टोर करवाते हैं हम लोग। तो बैंकिंग का फ्रंट एंड एप्लीकेशन है, जो रिलेशनल डेटा मॉडल जो बात करें ना, वो फ्रंट एंड एप्लीकेशन है। एज सुन एज आप एज ए यूजर, एज सुन एज यू एज ए यूजर, जब भी आप लोग कुछ डेबिट करते हैं तो ये इंफॉर्मेशन स्टोर होता डेटा वेयर हाउस में, फिर बैलेंस, फिर ये भी स्टोर होता। सो इससे एडवांटेज क्या होता, हिस्ट्री मालूम होती। सो डेटा वेयर हाउस में हम लोग एक्चुअली क्या करते हैं, हिस्ट्री स्टोर करते हैं। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय है, उसका एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम एंड उसका लोकेशन है, समझो इस लोकेशन इज देयर, देन एम्प्लॉय नेम ए एंड लोकेशन हैदराबाद। नाउ सपोज ये लोकेशन चेंज हो गया एम्प्लॉय का, सपोज एम्प्लॉय लोकेशन चेंज। सो यहाँ आप नोटिस करो एम्प्लॉय आईडी सेम है 1। ओके, जो रिलेशनल डेटा मॉडल का डायग्राम मैं बताया ना, शोड रिलेशनल डेटा मॉडल डायग्राम, राइट, एम्प्लॉय आईडी क्या है, प्राइमरी की। सो प्राइमरी की में रिपीटेशंस आ सकते क्या, प्राइमरी की में वैल्यूज रिपीट नहीं होना चाहिए ना, यूनिक रिकॉर्ड स्टोर करते हैं हम लोग, विल स्टोर यूनिक रिकॉर्ड। Yep. But what happens in dimensional data modeling is will allow duplicates to store history. So ये difference है. This is the difference between relational data model and dimensional data model. In relational data model, will not allow duplicates. Will update the data. Okay. So in relational data model, will allow it to update the data with new value. Now in dimensional data modeling, what we'll do, समझो this person moved to Bangalore, so we'll have a new column called flag value. You will set this as I, we'll set this as A. So that means actively this employee is working in Bangalore now. So same case relational data model में क्या होता, relational data modeling में for example let's suppose same table है, okay, and so it's not flag values, ठीक है, flag remove करो, and all these values we have in the table. Okay, so in relational data model what we will do, since this is defined as primary key, this field is defined as primary key, will not allow duplicate, and primary key identifies unique record in a particular row. So now employee ID 1 uniquely identifies one employee. Now we cannot store duplicate. So as soon as you store duplicate data, it will error out. First of all, it will not allow you to insert the data into the table. It will error out. So what we'll do in relational data model, we'll update, we'll write an update statement, Bangalore. So this is the difference between dimensional data model and relational data model. So in dimensional data modeling, we will allow uh, to
insert duplicate records intentionally by using some flag value, by using some start date and end date. So again, how we do it? यहाँ पर yeah, how we do it is different. Here, how we do is different. Okay. So here we do it through ETL. So just now we discussed, right? यहाँ पर data analyst के लिए basic data analyst should know some basic ETL concepts, right? So data modeling is done through data modeling concept and data warehousing concepts and ETL combination of these three. ये three बन के तो इस पे हम लोग डे टू डे काम नहीं करेंगे एज ए डेटा एनालिस्ट, but we should understand like how tables are dimensional tables are defined. It has null. So for example, client, okay, a client asks you, okay, tell me where employee AAA is located. Okay. Now let's say you query, you wrote a select statement, select a location from employee table where employee name equal to this. Okay. So in relational database, you will get existing output as Bangalore. Now you give the result to the client. Okay, Bangalore. This person is located in Bangalore. Let's say you wrote the same query in dimensional data model. You wrote the same query in dimensional data model. Now you will get two results, two records, Hyderabad and Bangalore. Now you cannot give client, I'm saying as an example, you cannot give these two values because one person cannot be two places at the At same two time. places. So for this, we'll have a history. In dimensional data model, we have a history. So data analyst work is to find out whether he is actively working in which location. So active location we need to find. So now you need to have one more condition where, and flag equal to A. So that will define, okay, this person is actively working on Bangalore location. Now you got one more client request. Okay. So previously where this employee worked. So you will have a history in the data warehouse, start date, end date. So let's say, for example, 2021, Jan, he started 2022, Jan, he he moved out of Hyderabad, then started from here, 2022, 01, 02. Okay. Now this field will be null because he's still here in the Everyone. Bangalore. So this field will be null. That means he's still in Bangalore. So what happens if he move to another location? So we'll have one more record. This end date will be updated as like 2023, like whatever the location he shifted on 01. And this again, this will start with this particular date. Actually, to this date it will start. Then this will be null. So all these process is done through ETL concepts. So you should know some of the ETL concept. So that is called uh, slowly changing dimension, SCDs. Okay. So these are some of the interview questions also data analysts get asked. Like for example, these will be scenario based questions also. Now, let's say on the client perspective, he asked you, uh, like what are the places this
employee worked and in which year he was in what type of location. Now you see, let's say you write a select query, select uh, year of start date and employee name from employee, group by year, or year and location, need to give year and location, group by year and location where uh, name name equal to something. So this will give this employee's location in whatever the year he worked on. So data analyst will most of the time he will see these kind of, he work with these kind of tables, but sometimes you'll have to build reporting and analysis on relational data tables also. Okay, so I think um, you can study some of the fundamental concepts on these. Okay, so one thing is what is a relational data model, what is dimensional data model. Now, just I am not giving you specifics, I'm giving why, just I'm giving you the high level. So you try to find out why we build relational data model, how we build, okay, and what are the core concepts required to build a relational data model. Same thing here. Okay, so I'm giving you as a task so that you can find out and let me know, then we can further discuss on this. Okay, so mm, where were we? Here. Okay. So we discussed about SQL, ETL, some basic data modeling. Okay. So I see some more people have joined. Hi, Pavitra. Okay. So if you have anything, any questions, Pavitra, you can discuss. Y- You can share like what are you trying to um, achieve your, your goals so that I can help you out. Any problems that you're facing or anything that you're looking at. Okay. Okay. So, so far, whatever we have discussed, do you all have any questions? Then we can continue. I think this meeting will end in some time. This Continue for meeting is being questions. recorded. So, जो भी मैं आप लोगों को समझाया हूँ, whatever we have discussed related to data modeling and relational dimensional, you can ask questions. If you have any questions, you can ask. If you have not understood also, you can come up. I can answer it. शाद For भाई me, I आप mean, I do not have any questions. शाद भाई आप जो बोले थे वो एक बार है ना, इसमें चलो रियल टाइम में कैसा करते हैं, जैसा एसएसआई इसमें वो डाटा मॉडलिंग को एक टूल का लाइक उसमें कर को दिखा तो जरा ये माल अच्छा रहता को मैं समझ रहा हूँ। ओके, हाँ हाँ, हैंड्स ऑन तो करेंगे। मैं एसएसआईएस तो नहीं, ऑल्ट्रिक्स यूज करके बताऊंगा। ऑल्ट्रिक्स टूल हाँ भी तो बहुत डिमांड में है करेंटली डेटा एनालिस्ट के लिए।
जिन ऑल्ट्रिक्स एंड टैब्लियो एंड सीक्वल, ये 3 स्किल्स बहुत डिमांड में है। लेकिन बैक एंड में ये सब चीज़ें हैं ना, ये सब चीज़ें ये इंटरव्यू में भी आते हैं जब आप वर्क करते हो ना, मतलब वो चीज़ें आपको सामने आते हैं। ओके, ये डेटा मॉडल ऐसा बनाया, क्योंकि डुप्लीकेट जब है एक टेबल में, जनरली हम लोग क्या बोल रहे हैं कि डुप्लीकेट्स नहीं रहना चाहिए, लेकिन एक टेबल में हम लोग डुप्लीकेट्स देखे तो ये हम सोचेंगे, अगर हमको फंडामेंटल कॉन्सेप्ट नहीं मालूम कि हम सोचा अरे डुप्लीकेट्स क्यों है इसमें, कौन सा रिकॉर्ड वैल्यू चूज करूँ मैं, वो क्वेश्चंस रहते हैं। तो वो क्वेश्चंस का आंसर क्या है, ये है डेटा मॉडलिंग। सो रिलेशनल डेटा मॉडल अलग रहता, डायमेंशनल डेटा मॉडल अलग रहता। सो रिलेशनल डेटा मॉडल क्या है, फ्रंट एंड टेबल्स, एप्लीकेशन टेबल्स बोल सकते हैं आप। सो वी कैन से एप्लीकेशन टेबल लाइक फ्लिपकार्ट का डायरेक्ट एप्लीकेशन टेबल क्या है, रिलेशनल डेटा मॉडल। एंड डेटा वेयर हाउस क्या है बोले तो रिलेशनल डेटा मॉडल एज ए सोर्स, बीच में ETL टूल आता, and then that ETL tool every day picks up that data from relational data source and uses ETL concepts like insert or incremental load or full load, uses those concepts like SCD types, slowly changing dimensions, fact and dimension tables, and star schema and snowflake schema, uses these concepts and put data into the data warehouse. तो डेटा वेयरहाउस भी एक डेटाबेस है अगेन, रिलेशनल डेटा भी डेटाबेस में ही स्टोर हो रहा, डेटा वेयरहाउस भी डेटाबेस में ही स्टोर हो रहा फाइनली। लेकिन कॉन्सेप्ट, वे ऑफ डिजाइनिंग अलग है। रिलेशनल डेटा अलग तरीके से डिजाइन कर रहे, जो एप्लीकेशन नीड्स, फ्रंट एंड यूजर्स, डायरेक्ट जो यूजर्स इंटरेक्ट कर रहे हैं ना, वो लोग को हेल्प कर रहा। और डायमेंशनल डेटा जो है, रिपोर्टिंग एंड एनालिटिक्स, जो इन कंपनी वाले जो इनसाइड वो लोग एनालिटिक्स करना चाह रहे कि ओके हमारे यूजर्स कितने लॉग इन कर रहे हैं डेली, ओके कितने ऑर्डर्स आए, कितने डिलीवरीज है, कौन से ऑर्डर्स स्टक है, कितने इश्यूज है। सो ये जो डेटा वेयर हाउस जो है ना, इनसाइड जो कंपनी है, फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट वालों को हेल्पफुल होगा डेटा वेयर हाउस, वो लोग बनाए तो। और उस पे एनालिटिक्स करके वो लोग क्विकली एक्शन ले सकते हैं, कहीं मतलब ब्लॉकर्स वो लोग को दिख रहा है कि यहाँ पर डिलीवरीज रुक जा रहे, तो वो लोग क्विकली उसमें क्योंकि ऑलरेडी वो लोग डेटा वेयरहाउस बनाए, वो डेटा वेयरहाउस पे विजुअलाइजेशन बनाए, तो वो लोग को विजुअलाइजेशन में कैलकुलेशंस रहते हैं ना, कितने ऑर्डर्स कौन से लोकेशन में आए, कौन सा ऑर्डर स्मूथली जा रहा, कौन सा ऑर्डर ज्यादा टाइम ले रहा। हालांकि SLAs रहता ऑर्डर्स का 1 और 2 डेज, अगर उससे भी ज्यादा टाइम है तो वो लोग कांटेक्ट कर सकते हो। तो ऐसा मतलब एंड टू एंड ऐसा रहता, एक तो एप्लीकेशन साइड, फ्रंट एंड साइड, एक बैक एंड साइड। तो डेटा वेयर हाउस और डायमेंशनल डेटा मॉडलिंग, ETL कॉन्सेप्ट्स, ये बैक एंड साइड है। तो डेटा एनालिस्ट इसको यूज करते, बिजनेस यूजर्स के साथ वर्क करते, और उसको विजुअलाइजेशन टैबल्यू और पावर BI या SQL यूज करके वो लोगों को फाइनल रिजल्ट दे दे। अच्छा, और कुछ क्वेश्चंस है क्या यूसुफ, हिदायत? So what I've understood, अब मेरे को like I have understood half of it, half, more than half of it, but हम्म, there is still a blank space in my head because I'm not ओके, from this same background. I am ओके, from actually healthcare background, so it is kind of like a bit difficult for me to just catch hold of some things. But yeah, I got it. I got the logic. Like how are we using relational database? How are we like why are we using dimensional database? Uh, yeah, the examples also मॉडल, I हाँ, understood. Yeah, it modeling. रिलेशनल Yeah, डेटा मॉडल एंड डायमेंशनल डेटा मॉडल। ओके, yeah. I just ठीक got है। the सो like. ओके, ओके, एनीथिंग एल्स यू वांट टू ऐड? ओके, Mm, हिदायत, एनीथिंग एल्स यू वांट टू ऐड?
No, no questions from my end. Okay. So I shared you one PDF document, right? So in that document, there is one task for uh, us. So if we go through that task and try to do it, then you will have some idea on that. So ओपन है क्या आपके पास? किसी के पास ओपन है तो शेयर करो. लैपटॉप पे ओपन है क्या? मेरे पास है। हाँ, मेरे हाँ, पास ओपन में है शायद भाई। हाँ, शेयर करो आप. मैं स्क्रीन शेयर 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 शेयर। शायद भाई दिख रहा है आपको? हेलो? हाँ, हाँ, आपका स्क्रीन दिख रहा है. हाँ, दिख रहा है. वो पीडीएफ ओपन करना. हाँ। ओके, लास्ट पेज पे, जो लास्ट पेज. इस पे? थोड़ा ऊपर आना. हम्म. हम्म। और थोड़ा ऊपर. हाँ, हाँ, और थोड़ा. हाँ, बस बस. लास्ट सेकंड पेज. नॉट दिस वन. लास्ट सेकंड. और थोड़ा नीचे आओ. कम डाउन, कम डाउन. ये है क्या? No, not here. Come even down more. 26 number, page number 26. हाँ, wait here, wait here. Just zoom in करो इसको. हाँ, so first line पे. Okay, designing a database. So just read this. Okay. हम्म। So अगर so what I will do, I will not do it now. आप लोग क्या करो, ये रीड करो. ठीक है. जस्ट ओके। प्लेन पेपर पे रीड करने के बाद, जो भी ये टास्क दे रहा ना, प्लेन पेपर पे कोडिंग वही, कुछ नहीं. जस्ट प्लेन हम्म। पेपर पे टेबल्स बनाओ, और टेबल्स में क्या क्या एट्रीब्यूट्स एज ए, मतलब जो इमेज बताया था ना रिलेशनल डेटाबेस का, वैसा टेबल्स बनाओ उसमें. जैसा क्लब्स बोल के बता रहा, क्लब का एक टेबल, स्टूडेंट्स का एक टेबल, हम्म। मेंबरशिप्स. वैसा टेबल ओके बना के ओके। उसके अंदर एट्रीब्यूट्स क्या क्या आते हैं वो प्लेन पेपर से, मतलब आप लिखो एट्रीब्यूट नेम्स. कंसिडर इट एज ए फील्ड नेम. देन कौन सा प्राइमरी की होना चाहिए, कौन सा फॉरेन की होना चाहिए, वो आप सोच के आप लोग बनाओ. तो इससे क्या आता, डेटाबेस ये रिलेशन, इस काइंड ऑफ रिलेशनल डेटा मॉडल. मतलब आप लोग रिलेशनल डेटा मॉडल डिजाइन कर रहे बोले तो इससे क्या आता, कॉन्फिडेंस आता. और आपको, अब आप जैसा यूसुफ आप बोले ना कि मतलब आप समझ में आया, ये एक्टिविटी करने से आपको क्लैरिटी आती कि कैसा एक्चुअली बनाना ओके। डेटाबेस रिलेशनल डेटा मॉडल. देन हम लोग और एक एक्टिविटी करेंगे कि डेटा वेयर हाउस में डायमेंशनल डेटा मॉडल कैसे बनाना. तो अभी मैं इसको नहीं बताऊंगा, आप लोग करो. इस- अच्छा, ये स्क्रीन शेयर करने करना के नहीं बाद करना है? नेक्स्ट. हाँ, बस स्टॉप कर दो. करने के बाद नेक्स्ट कल कनेक्ट करेंगे ना हम लोग, जो जो भी आप लोग बनाए उसके ऊपर बात करेंगे. हम्म। हाँ, मैं जस्ट नॉर्मल मालूम कर लेना चाहता हूँ कि प्रदीप प्रदीप भाई, आप दोनों मिलकर काम कर रहे हैं क्या? नहीं, नहीं, प्रदीप और मैं सीडी के ग्लोबल में एक साथ ही थे हम लोग. प्रदीप को मैं जानता हूँ. अभी वो यूएस में है, वहां पर Yep. जॉब्स वगैरह ढूंढ रहे हैं. Masters. मास्टर्स खत्म हुआ है मेरा. मास्टर. जब सर्चिंग फॉर जॉब्स नाउ. अच्छा था. मास्टर किस में कर रहे हैं? हो गया. मतलब मास्टर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट. अच्छा, तो हाँ, ठीक है. हाँ, वेरी गुड. ठीक है, फिर वाइंड अप करेंगे हम लोग. नेक्स्ट कल कनेक्ट करेंगे. ये एक्टिविटी करो आप लोग.
अच्छा Sure, sure, ठीक है sure, ना, sure. चलो, बाय बाय, Yeah, yeah. Thank you. थैंक यू। Thank you, everyone.